एग्जैक्टली और इट्स वेरी पता है शर्म आती है ये बोलने में कि यार हमें इतना कौन सा एक्सेप्टेंस करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि हम टीवी के लोग हैं. कभी कभी लगता है इट्स वेरी दिस थिंग कि हम ऐसा No, लगता है even I कि feel हम bad sometimes that you're from TV. We don't want to do. Even when I started my live chat, few people have helped me a lot. Few people encouraged me, but a very few which I knew, and I tried asking them about the show. That at the end of the day, they have that thing in mind that are you to TV say एग्जैक्टली and all. But पर I मुझे feel TV आई people are फील the वेरी more weak. प्राउड. They get more they have more approach towards their audience. I see TV people, even actress कुछ नहीं होता. It's always actor and actress, but they एग्जैक्टली actually capitalize it. But you still made it. सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग रश्मि. बट पहले बहुत डिफिकल्ट था कि हम लोग टीवी से हैं और अच्छा टीवी से हैं इतना छोटा दिखा दिया जाता है जैसे हम कुछ रद्दी सा काम कर कर आ रहे हैं. यार टीवी में जितनी मेहनत है ना लाइफ में उतनी किसी चीज में मेहनत नहीं है. मैंने तूने हम लोगों ने आई हैव वर्क फॉर फकिंग 148 hours in my life. I've given my blood and my soul to this thing and I feel proud that I'm from television. Why will I not feel proud? मेरी किस्मत है अगर मुझे कोई अच्छी फिल्म मिलती है तो मेरी हम सब मेहनत करते हैं. हमें मुझे सिर्फ एक डेफिनेशन पता है फिल्म और टीवी मुझे नहीं पता. आई जस्ट नो दैट आई एम एन एक्टर. आई हैव टू परफॉर्म. आई हैव टू गिव माय बेस्ट एंड दैट्स व्हेन आई रीड द स्क्रिप्ट व्हेन आई गो थ्रू द स्क्रिप्ट I see what I am playing in it. I see what I am doing in it. I don't want to just be a backup or कहीं पीछे में खड़ी हूँ. I don't want to be like that. I want to give my performance. But अगर मैं चूज कभी कभी रोल ऐसे कर भी लूँ ना रश्मि जहाँ पर मैं बैकअप में खड़ी हूँ I know I'm very confident enough about myself कि मैं निकल कर आ जाऊंगी उस 5 मिनट में भी मैं निकल कर आ सकती हूँ. So that's my confidence. But apart from that people are I feel very bad जो अब पता है जो टीवी के लोग हैं. मैंने कितने टीवी के लोग देखे हैं रश्मि. they feel very hesitant like to say कि हम टीवी के हैं. I don't understand. After becoming such big stars also they are not ready to accept that we belong to TV. No, they're not. I have seen many people like it. And I feel very proud to say this. While Manikarnika was my first film, Manikarnika was my first film. And when I started promoting Manikarnika, in each and every interview, Rashmi, I have given this statement that yes, I belong to TV. And whatever I am today, it's all because of TV. I know तेरी मेरी एक्टिंग कई गुना जो बाहर लोग हैं उनसे कई ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि हम टीवी से सीख कर गए. हम 15 पेजेस ऐसे पढ़ सकते हैं. हम पढ़ सकते हैं 15 पेजेस बिना देखे रश्मि. वी डोंट नीड अ प्लैंक कि कोई प्लैंक लेके खड़ा और हमें लाइंस पढ़नी है. नो, we can emote without glycerin. We can do whatever we want to do because TV has taught us something like that. We have been working like for कितने घंटे हमने टीवी पर काम किया, कितने साल में टीवी पर काम किया, and we all are proud of it. So I think वो जो एक ब्रिज है, I think it's high time that we should fill that bridge और वो हमसे ही बनेगा क्योंकि हम टीवी से फिल्म में जा रहे हैं. और अब तो देख सकती है कि फिल्म के लोग टीवी पर आ रहे हैं. They're doing digital, they're coming up with so many digital things. क्यों अब हम वहां जाने से अच्छा अब लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा अच्छा माध्यम है लोगों के लिए. हम रोज दिखते थे लोगों को घर में. हम रोज कहीं ना कहीं मैं 9 से 9:30 होती थी पवित्रता पे. And people were part of their family. If we are crying, they cry. If we are happy, we are still a part of their family, Rashmi. They see somewhere, कोई part है उनका जो हमें दिखता था, and there is nothing wrong in it. I feel TV is the best medium to start your career. तो मुझे पता है, मैं जानती हूँ अगर कल को मुझे कुछ होगा तो वो मेरे साथ रोएंगे कि यार इसको क्या हो गया. This is how we have connected to the audience, Rashmi. This is what I feel. And we all are very proud that we are from television, dude. I belong to television. I'm very proud of it. I'm really happy that we belong from such fraternity that people actually create talent. People have the talent to create one film in 1 week. People have the talent. I don't want to impress anybody, Rashmi. And it's not easy. It's very challenging. I don't want to impress people out there that it's not wrong. No, even I agree with you on this. कि मुझे नहीं because even I have some lot of time it has happened. मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. मेरे बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं when anybody is talking about television this that. I think और टीवी के बारे में क्या बोलता है ना तो मेरी तो जान निकल जाती है. हाँ, मुझे चुभती है ये बात. मुझे बहुत चुभती है. रश्मि आज हमारे पास जो भी है experience about it. I said I will definitely fight for it. Listen ना, आज मेरे पास जो भी है, मेरा घर, मेरी कार,
मैं अगर अपने माँ बाप का ख्याल रख सकती हूँ, मैं अपने घर का ख्याल रख सकती हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टीवी. I have not made any money from my film fraternity. I have not done it. Maybe I'll do it in future, but not till today. Whatever I am today, it's all because of Pavitrishta, and I'm very proud to say this. I'm super proud to say this. And you know, people they don't understand. हम लोग अब पता है क्या होता है रश्मि, हम तो बोल रहे हैं ये चीज को, लेकिन there are other people वो क्या करते हैं फिल्म फ्रेटर्निटी वालों को इम्प्रेस करने के लिए, दे शो दैट नो वी आर फ्रॉम नो फिल्म टीवी तो बहुत बकवास था, फिल्म्स आर बेस्ट, यू नो. आई विल नेवर डू दैट इन माय लाइफ टू इम्प्रेस फिल्म. I don't want to impress anyone. I'm an actor. Actor doesn't need to impress. Actor needs to act, and that's what I'll do. That's what I belong to. But you know, all the television actors should also feel proud of it, and they should enjoy every moment which they are getting, because you know, getting such big recognition, good lifestyle, and good, you know, confidence, and the kind of power within they have today because of TV, they should Exactly. just accept it. But And they don't. There I are am few. proud of you, Anko. I am I'm proud proud of of you you. too, Rashmi. Not We as all an are proud. actress that you have started from TV, but as a friend, as a human being, I know how supportive you are towards your family and friends, how strong-minded you are when you are yourself going through such a rough patch, and still, you know, standing tall and strongly with your friends and family and smiling on the face. Not even other person will not even realize that, you know, what problem are you facing, what pain are you going Yeah. through, what your heart is crying but your face is smiling. I know all that thing. So that is the reason that makes you a wonderful person and amazing actress. Thank you so much. Yes. Thank you. Yes. And I will say, guys, हमारी जर्नी बिल्कुल इजी नहीं थी. बिल्कुल हमें भी नहीं खाने थी. के लिए भी I think पूछना मेरी और रश्मि की पड़ता था जर्नी, क्योंकि मैं आज बताना ये शॉर्ट I है want to चलो say करने something. के लिए. Listen. मेरी I और know there रश्मि was की a time जर्नी. जब अंकिता को डेंगू हुआ था and she was not Yes. allowed to go home, but still मुझे शूट करना पड़ता था because those were the days when I knew, because I'm very close to her, Yes. but not मुझे even, डेंगू हुआ था, मुझे याद है, मुझे अर्चना मानव you का know, कोई भी पूरा सक्सेस टाइप कुछ था. फेलियर से ही जाता है. You have to go through a failure in your lot of problems in life, difficult situation in life, and then you reach to your goal, you reach to your aim that you have imagined yourself. So I'm being very रश्मि honest. तभी तो हमें सक्सेस पता How does it चलता है. feel now? How does it I feel feel now good. that you're a I feel film good. actress and having such a I, difficult journey see, I is don't know definitely not about this easy. film. I'll tell you one thing. See, film actress, I feel good about it. क्योंकि बचपन से मैंने रश्मि सपना देखा था कि मैं हीरोइन बनूं. You know, it's like a dream. It's a dream of yours also. I know that. You know, हम सब एक सपना लेकर, हम लोग वो नहीं रश्मि कि हमने अभी सोचा है और हमने बन गए. हमारा बचपन से यही ड्रीम रहा है, तेरा और मेरा, जितना मैं जानती हूँ हम दोनों को. हम कभी कोई डॉक्टर या हम कुछ और नहीं बनने वाले थे कि हम चल अच्छा आ गया मौका तो कर लेते. No, we dreamt about this and we wanted to become this. We always wanted to go for this. And when you see yourself on that big screen, no Rashmi, it's an amazing feeling. मतलब उस चीज से अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप अपने सपने को सामने देख रहे होते हो जो आपने किया है. यू नो, जब मैंने मणिकर्णिका में फर्स्ट टाइम अपने आप को देखा कि लोगों ने मुझे बोला बहुत कम रोल था, ये था. आई डिडंट गिव अ शिट, आई डोंट केयर. व्हेन आई लुक्ड एट माय सेल्फ, आई वाज जस्ट, मैं कौन से 9th 10th 11th क्लास पे थी. I was so happy to see myself. I think we met at one of a friend's house, and this I'm sharing with all the viewers here. ये अपने हमारे common friend के घर पे बैठे थे हम, ऐसे ही relax feel कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बैठ के chill मार रहे थे, and you know, out of nowhere she just मेरा हाथ पकड़ के मुझे balcony में लेकर गई, and she showed me some short films of film. I said, what is this? She said, it's my own song, Rashmi. मेरा खुद का गाना है, but please किसी को बोलना नहीं है because ये promotion के लिए है. And I was like, are you serious? That was, I think, such a big day. But आप किसी को बोल क्योंकि रश्मि हम आज तक लोगों के गानों पे डांस करते आए यार, आज हम अपने गानों पे डांस करेंगे यार. It feels yes, good. and there was nothing, but you know, that was the only moment which हम लोग वो enjoy करे, इसके लिए we started farting suddenly. Yes. So yes, all the baby stuff which we did was But it feels great. It feels पागलपन great. किया तुम्हारे साथ तो मैंने. मतलब I think unplanned. And a lot of people, I must say that about Ankita, that I don't know, but I just felt like sharing you to कि हमारी इतनी thick friendship कैसे है.
31st की नाइट थी आई थिंक, एंड हम लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे थे. तो एट दैट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड शी न्यू इट. तो मैंने बोला मैं नहीं आ रही हूँ, तू जा. And I was No. disconnecting myself from each and every person because I like to keep my personal space very personal, and professional has to be different. Only few people who are very connected to me, so they knew it. मैडम ने क्या किया, मेरे गाड़ी के नीचे गाड़ी लेकर आई, 1 घंटा वेट किया. She did my backing, she did everything. She did my makeup I stuff, and मेरे remember कपड़े, that. मेरे मैचिंग जूते and jewelry. She packed her set and she said, "Okay आंटी बाय, हम जा रहे हैं, 4 दिन बाद आएंगे." And I'm like, Ankita. But I think Yes, I that was remember. the We went to best Pune. thing. We went to Yeah. Pune for New Year's. Yes, Oh I God, remember, it was amazing. it was such a crazy night. Oh my God. बहुत But it मस्ती was की so much यार. आई fun. थिंक अगर हम So पीछे much जाए fun. रश्मि, यू रिमेम्बर एट दिस बालकनी जब भी पार्टीज होती थी बाहर में, यू एंड घर में, और यू एंड मी यूज्ड टू सिट एंड टॉक. आई रिमेम्बर कि मैं बस बातें करते रहते थे, मुझे पता नहीं क्या बातें करते थे, बट यूज्ड टू टॉक एंड टॉक एंड टॉक. बट वी Yeah. टुगेदर एंड इट फील्स गुड. पता है एक दूसरे को देख के अच्छा लगता है रश्मि. पता है दोनों एक ऐसी फ्रेंडशिप होनी खुश. एंड आई थिंक विथ यू आई ऑलवेज हैव दिस. मैं तुझे जो चाहे वो बोल सकती हूँ. मुझे गुस्सा आ रहा है, आई कैन टेल यू. मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मुझे ये अच्छा लग रहा है, आई कैन टेल यू. आई कैन बी ओपन, आई कैन बी फ्रेंडली, I don't have to hide anything from you, Rashmi. So that's the beauty of our friendship, you know. And I think you're not somebody that you can go to people and talk about it. But with me, I'm bang on very sure that you share everything with me. And I'm grateful to God that you're in my life. And I'm grateful to God that I'm in your life, for sure. Thank you. I think, yes, I have already said it. But last but not the least, I know that I have already told you guys that she has a hidden talent which only her close one knows. And right now, I'm going to do that with her. And we're going to wrap up this episode. So, Ankita, हम अंताक्षरी खेलेंगे. मैं कुछ गाने गाऊंगी. Okay, let's keep it simple. मैं कुछ गाने गाऊंगी and you are going to translate it in Marathi. Okay, I'll try. Okay, check. Okay, I know. You're trying, I know it. You will do it. I will try. See, I know Marathi, but I don't know which song you're telling me. Okay, let's try. বড় লোকের বেটি লো, লম্বা লম্বা চুল. मैं लंबो लंबो. अच्छा, एक लंबो और दूसरा लंबो. गाना. What is it? हाँ, दूसरी. लंबो लंबो. Okay, दूसरा बेटी गाना. लो. Okay. लंबो लंबो. हाँ. लंबी लंबी. हाँ, दूसरा. मराठी में गाना है. You have to sing in your language which you love the most. Yeah. I know. Okay, sing. I know. हाँ, बोल. Okay, दूसरा गाना. ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ए. चल मराठी में गा. What is ढिंका चिका? ढिंका चिका is what? ढिंका चिका ए. Okay, you give up on this. You give up on this, चल right? मैं बताती हूँ. एक आंख मारू ऐसे. एक डोळा मारू तो मुलगा पटून जाए, दूसरा डोळा मारू तो दूसरी आंख मारू कलेजा फटून जाए, दोन्ही डोळे मारू तो मुलगी पटून जाए. This is what I can say. दोन्ही डोळे मारू तो मुलगी पटून जाए. हाँ. Last. What? You have to give audition. Imagine. Okay. I know that you must have given your audition first time in television, first time for the film, and this is for the first time you're doing it live for your fans. Okay. And you're doing this audition for your fans, and you have to go very Okay. candid about Okay. एक चुटकी सिंदूर से लेके you have to add कि मेरा पति भाग गया, and you have to एक end चुटकी it. सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू, यही वाला ना. वहां से लेके you have to make your own dialogue. एक चुटकी सिंदूर से लेके ओके ठीक है. ओके प्यार दिया मैंने तुम्हें, और हाँ, तुमने अच्छे. मेरे प्यार की कदर करते हुए बाजू वाली के साथ तुम भाग गए. And you have to say this with lot of, I'm like, Very good dialogue. Okay, हाँ, I'm ऐसे ready. दिल में मत ऐसे कुछ भर के, and you have to make cry यार. हम लोग को रुलाना है कि देख के रोना आ जाए. Shut up यार. I'm here to people make laugh, not cry, Rashu.
Okay, Okay, I'm ready? serious. Okay. Should I say action? Okay. Ready, एक ready. Okay, सेकंड ना ready. यार, एक्शन नहीं बोला यार मैंने यार. एक्शन नहीं बोलो. Okay, 1, 2, हाँ चल, ready 3. ना, action बोलो. Okay, Action. action. एक चुटकी सिंदूर. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू. तूने क्या किया मेरे साथ, बता क्या किया. मैंने तुझे इतना प्यार दिया, तूने मुझे क्या, तूने मुझे सिर्फ धोखा दिया. भाग गया पड़ोसन के साथ. तुझे शर्म नहीं आई. कमीने, कल मुंह है. जा ले जा मेरा ये एक चुटकी सिंदूर. कैसा रखा आपको मेरा ऑडिशन, बताया. Very nice, Anku. I love you. Thank you, Rachel. Thank you so much for coming on my show, and I was really excited for today's episode. I know that मैंने इतने सारे question लिखे थे, but मुझे end of the day, I know it's going to be very candid. You can't question your friends, and we really had some good topic to talk. Thank you so But much, I really want to Rashmi. ask you one more thing. You know, quarantine में अब अपना time कैसे बिताते हो? Because you know, lot of people, बहुत सबके पास सारी सुविधाएं नहीं होती. तो आप खाना कितना बनाओगे, फैमिली के साथ बात कितना करोगे, तो आप अपना अकेलापन भी कैसे निकालोगे. आप इतनी डिफिकल्ट, और पिछले 2 दिन से ऋषि जी और इरफान जी के जो बारे कर में रही हमें हूँ सुनिए अपना डेफिनेटली, जो भी हमारी या तो what do you what I'm do? doing is, Rashmi, as I told you, हम रोज ही बात कर रहे हैं अभी फोन पर, और I keep telling you that I sleep early, I get up early in the morning, I do meditation, I do a lot of I'm doing mandala. It's a different kind of coloring where you put your focus and everything, and I'm trying that thing also in my life. So these things are, I never, you know me, I'm a very, मतलब मैं बहुत late उठने वाली लड़की रही हूँ हमेशा से, but I'm getting up early 5 in the morning, doing meditation, which makes me feel good about myself, that I'm doing something different from what I used to do all the time, because this is a time where you can utilize it properly for yourself. You can go make yourself very positive about everything. So that's what I'm doing, and I'm keeping myself very motivated throughout the day, and I play housey, like time period जब हम अपने पूरी family हम लोग now to give time to your family also, Rashmi. Very, very important. I know you're staying with mama, and my mom dad are not here. They're in Indore. So like our whole family plays housey at one time, at 9:30 to 10:30. We give time to But you each have other your because they are cousins, also sitting at home. amazing cousins. Yes, I have my amazing cousins, Ashu, Aditya, Arpan. They all are with me, and my Scotch, my Hachi, and everybody's here. But I miss you. I Yes. miss you coming home, and I hope that I see you soon. You know I can't come during That's this it. pandemic, but अगर allowance हुआ तो definitely I'm going to come. I think रात को ही आऊंगी. आजा मिलने मेरी जानो. I miss you, yaar. Thank you so much, Ankita. I really had fun. And please tell something Thank you about so our much. Rakshita Thank you. I fans. want to say something. You know what Thank is you to all Rakshita, the right? Rashmi fans, my fans. What? You know about Rakshita, right? Were you saying What is something? Rakshita? Yes, Rakshita. That's what I was about to say. I want to say Rakshita. It's Rush. No, what is it? Rush and Ankita Rakshita. का Rakshita. Rashmi का Rush, Ankita का Kita. Rakshita. Oh, Rashkita. Okay. Thank you so much, everyone. And जितने भी तेरे fans हैं, they really love us, Rashmi. And I'm very grateful. जितने मेरे fans हैं, वो तुझे प्यार करते हैं. इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. So thank you, everyone, for making it possible. And thank you, Rashmi, for having me. You're wonderful. And I want to meet you jaldi और hug you jaldi. Jaldi से आजा. I will. I love you. Bye. Love you. Bye. Bye, everyone. Ta-da. Bye. Thank you. Bye, baby. So I think today's episode was really, really superb, I would say. Bye. Because मेरी दोस्त मेरे साथ थी. I actually had a lot of question to ask, a lot of things I had written. इतने लंबा list लेके जो बैठी थी. But yet I tried my level best. जो भी important questions थे वो मैंने उनसे पूछा, और जो मैंने नहीं पूछे
वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लेके सब कुछ बता दिया. एंड आई जस्ट वांट टू से दैट डेफिनेटली हर स्ट्रगल एंड द स्माइल ऑन हर फेस, दोनों चीजों का अगर कॉम्बिनेशन बना के अगर मैं बात करूँ तो बनती है अंकिता. यस, I know her very, very personally, and she is the one whom I'm very, very close to, and she knows me in and out. I'm sure आप लोग को सबको पता चल ही गया होगा. But I'm really happy to have a friend like her, and must say that कि सब कुछ खो दो, लेकिन अगर मेरे दोस्त यार मेरे पास होंगे ना तो मुझे ये पता है कि मैं दुनिया जीत लूंगी. एंड इतना तो बहुत अंधा भरोसा है that चाहे कुछ कमाऊं ना कमाऊं, लेकिन गिरकर वापस उठने की हिम्मत भी इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरे जो लोग हैं, मेरे अपने हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट शी केम ऑन द शो.